हेलो फ्रेंड्स, आगे के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कैनाल हेड वर्क्स। सो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स। सो द एंट्री ऑफ द सिल्ट इनटू अ कैनाल विच टेक्स ऑफ फ्रॉम अ हेड वर्क्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंस्ट्रक्टेड सर्टेन स्पेशल वर्क्स कॉल्ड सिल्ट कंट्रोल वर्क्स। सो जो कैनाल है उसके अंदर जो सिल्ट अंदर आ जाती है, वो सिल्ट को अगर हमें रोकना है तो उसके लिए जो वर्क्स मतलब जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स। सो दीज वर्क्स मे बी क्लासिफाइड इनटू अ फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट इज द सिल्ट एक्सक्लूडर एंड सेकेंड इज द सिल्ट इंजेक्टर्स। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सिल्ट एक्सक्लूडर्स। सो सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर दोज वर्क्स which are constructed on the bed of the river upstream of the head regulator. So the clear water enters the head regulator and silted water enters the silt excluder. So silt excluder हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? So bed of the river पे upstream साइड पे। सो जिसकी वजह से क्या होगा कि क्लियर वाटर है वो हेड रेगुलेटर में जाएगा और जो सिल्टेड वाटर है वो सिल्ट एक्सक्लूडर में जाएगा। सो इन दिस टाइप ऑफ द वर्क्स द सिल्ट इज देयरफॉर रिमूव फ्रॉम द वाटर बिफोर इट एंटर इनटू द कैनाल। मतलब कि जो जो पानी है कैनाल में जाएगा उसके पहले ही वो रिमूव हो जाएगा सिल्ट। सेकेंड है सिल्ट इंजेक्टर्स। सो सिल्ट इंजेक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड सिल्ट एक्सट्रेटर्स. These are those devices which extract the silt from the canal water after the silted water had travelled a certain distance in the take-off canal. मतलब कि सिल्ट एक्सक्लूडर में क्या था कि कैनाल में सिर्फ क्लीन वाटर जाएगा और ये सिल्ट इंजेक्टर्स में क्या है कि जो सिल्टेड वाटर है वो थोड़ा ऑफ टेक कैनाल में थोड़ा ट्रैवल करेगा. These works are therefore constructed on the bed of the canal and little distance downstream from the head regulator. River training works. So river training works हम लोग क्यों provide करते हैं? So river training works are required near the weir site in order to ensure a smooth and axial flow of the water and thus to prevent the river from the outflanking the works due to a changes in its course. The river training works required on a canal headworks are: first is the guide banks, second is the marginal bonds, and third is the grayons. So what is guide bank? So when a barrage is constructed across the river which flows through the alluvial soil, the guide banks must be constructed on a both the approaches to protect the structure from the erosion. मतलब कि स्ट्रक्चर को एरोजन से बचाने के लिए हमें गाइड बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा. गाइड बैंक सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस लाइक it protects the barrage from effect of scoring and erosion. It provides a straight approach towards the barrage. It controls the tangency of the changing the course of the river, and it controls the velocity of the flow near the structure. Next है marginal bonds. So the marginal bonds are earthen embankments which are constructed parallel to the river banks on or one or both the banks according to a condition. मतलब कि कभी कभी उसको पैरेलल भी प्रोवाइड करते हैं और कभी कभी बोथ डायरेक्शन में भी प्रोवाइड करते हैं. The top width is generally 3 to 4 meter and the side slope on the river side is generally 1.5 gem1 and that on the country side is a 2 gem1. The marginal bond serves the following purposes. So it prevents the flood water or storage water from entering the surrounding area which may be submerged or may be waterlogged. It retains the flood water or storage weir within the specified section. It protects the towns and villages from the devastation during the heavy flood, and it protects the valuable agricultural lands. So इसके बहुत सारे benefits भी है. Causes of failure of the structure. So
जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं वो कभी कभी फेल भी हो जाता है, पर उसके कॉजेज़ कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है irrigation structures for the diversion and distribution works are weir, barrage, head works, distributary head regulators, cross drainage works, etc. So these structures are generally founded on alluvial soils which are highly pervious. मतलब कि alluvial soil पे ये सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं हमें, क्योंकि रिवर के आजू बाजू में वो टाइप की सॉइल ही हमें मिलती है और वो हाईली परवियस भी होती है. So the soils are easily scored when the high velocity water passes over the structure. So क्या होता है कि वो जो मतलब हैवी वाटर वेलोसिटी के साथ पानी आता है तो उसके नीचे की जो सॉइल होती है वो स्कॉर्ड हो जाती है, मतलब कि रिमूव हो जाती है. So the failures of the weir constructed on the permeable foundation may be occur due to a various causes which may be broadly classified into a following two categories. मतलब कि failure due to subsurface flow और a failure due to surface flow. मतलब कि surface flow पे जो पानी आता है उसकी वजह से failure हुआ है कि failure subsurface flow की वजह से हुआ है. So first है failure due to subsurface flow. सो कैसे कैसे फेलियर्स हो सकता है? सो फर्स्ट है फेलियर बाय पाइपिंग और अंडरमाइनिंग. सो वाटर फ्रॉम द अपस्ट्रीम साइड continuously percolates through the bottom of the foundation and emerges at the downstream end of the weir or a barrage flow. The force of percolating water removes the soil particles by the scoring at the point of emergence. As the process of removal of the soil particles goes on continuously, the depression is formed which extract backwards towards the upstream through the bottom of the foundation. मतलब कि जो अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में पर्कुलेट होता है पानी, उसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्कुलेशन जो पॉइंट्स पे से होता है वो पॉइंट पे से धीरे धीरे सॉइल रिमूव होना स्टार्ट होती है, मतलब स्कोरिंग होना स्टार्ट होता है और उसकी वजह से क्या होता है स्ट्रक्चर बॉटम ऑफ द फाउंडेशन है वो बैकवर्ड साइड पे हो जाता है. A hollow pipe like a formation thus develops under the foundation due to which the weir or barrage may fail by a subsliding. This phenomena is known as a failure by a piping or undermining. Second है failure by the direct uplift. So the percolating water extracts upward pressure on the foundation of the weir or barrage. If this uplift pressure is not counterbalanced by the self weight of the structure, it may be failed by a rupture. मतलब कि जो पर्कुलेटर वाटर आता है, पर्कुलेटिंग वाटर वो डायरेक्ट फाउंडेशन पे प्रेशर जनरेट करता है और अगर ये प्रेशर को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वो सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर से ही फेल हो जाता है. सेकेंड था फेलियर ड्यू टू सब सरफेस फ्लो. मतलब कि जो सरफेस पे फ्लो होता है उसकी वजह से जो फेलियर होता है उसमें फर्स्ट है बाय हाइड्रोलिक जंप. हाइड्रोलिक जंप क्या है वो हमने आगे आप लोगों ने AFM में देखा था कि हाइड्रोलिक जंप क्या है. सो व्हेन द वाटर फ्लोज with a very high velocity over the crest of the weir or over the gates of the barrage, then hydraulic jump develops. मतलब कि हैवी वेलोसिटी से पानी अचानक से आता है तो उसकी वजह से फ्लो हाइड्रोलिक जंप डेवलप करता है. सो दिस हाइड्रोलिक जंप कॉजेज अ सक्शन प्रेशर और अ नेगेटिव प्रेशर ऑन अ डाउनस्ट्रीम साइड which act on a direction uplift pressure. If the thickness of the impervious floor is sufficient, then the structure fails by a rupture. Second है by scoring. So during the floods, the gates of the barrage are kept open and the water flows with the high velocity. So the water may also flow with a very high velocity over the crest of the weir. Both the causes can result in a scoring effect on the downstream and on the upstream side of the structure. Due to scoring of the soil on the both side of the structure, its stability gets endangered by a shearing.
डिज़ाइन एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं. सो फर्स्ट है सब सरफेस फ्लो. सो द स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन सच एज द पाइपिंग फेलियर डज नॉट अकर ड्यू टू अ सब सरफेस फ्लो. मतलब कि सब सरफेस फ्लो की वजह से पाइपिंग फेलियर नहीं होना चाहिए. डाउनस्ट्रीम पाइल मस्ट बी प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द एग्जिट ग्रेडियंट एंड टू प्रिवेंट पाइपिंग. मतलब कि डाउनस्ट्रीम साइड में पाइल प्रोवाइड करनी चाहिए. Impervious floor of the adequate length is provided to increase the path of percolation and reduce the hydraulic gradient and the seepage force. Next है the seepage path is increased by providing a piles and impervious floor. The thickness of the floor should be sufficient to resist the uplift pressure due to a subsurface flow. A suitably graded inverted filter should be provided at the downstream end of the impervious floor to check the migration of the soil particles along with the water, and the filter layer is loaded with the concrete blocks. Second है surface flow. The piles at the upstream and downstream end of the impervious floor should be provided up to a maximum score level to protect the main structure against the score. मतलब कि maximum score level तक piles generate करनी चाहिए. The launching apron should be provided at the upstream and downstream end to provide a cover to the main structure against the score. मतलब कि launching apron provide करना चाहिए both side पे. A device is required at the downstream to dissipate energy. For a large drop, hydraulic jump is used to dissipate the energy. मतलब कि कोई dissipate energy dissipator और device provide करना चाहिए downstream side पे. Additional thickness of the impervious floor is provided at the point where the hydraulic jump is formed or to counterbalance the suction pressure. मतलब कि एक thickness वाला एक फ्लोर impervious फ्लोर प्रोवाइड करना चाहिए वहाँ पे. The floor is constructed at a monolithic structure to develop a bending resistance to resist the suction pressure. मतलब कि कोई बीम एक्शन जैसा कुछ प्रोवाइड करना चाहिए. अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग खोसला's theory. So many of the important structures such as the weir, barrage are designed on a basis of Blake's theory between the periods 1910 to 1925. In 1926 and 1927, the upper channel canal siphons designed on a Blake's theory started causing undeterminating troubles. So investigating started, which ultimately led to Khosla's theory. So following are the sum of the main points from the Khosla's theory. First is the outer faces of the end sheet piles were much more effective than the inner ones and the horizontal length of the floor. Second is the intermediate piles of the smaller length were ineffective except the local redistribution of the pressure. And third is the undetermining of a floor started from a tail end. Fourth is that it was absolutely essential to have a reasonably deep vertical cutoff at the downstream end to prevent the undetermining. Khosla and his associates took into account the flow pattern below the impermeable base of the hydraulic structure to calculate the uplift pressure and exit gradient. मतलब खोसलास जो है उन्होंने क्या किया कि जो इम्परमेबल बेस है उसके नीचे की मतलब फ्लो पैटर्न देखी और अपलिफ्ट प्रेशर और एग्जिट ग्रेडियंट को कैलकुलेट किया. Seeping water below a hydraulic structure does not follow the bottom profile of the impervious floor as started by a Blake, but each practical traces its path along a series of streamlines. So method of independent variable क्या है? So most designs do not conform the elementary profile. मतलब कि जो specific cases होता है उसमें elementary profile conform नहीं होती है. So in actual cases we may have a number of piles at the upstream level, downstream level and intermediate points, and the floor also has the some thickness.
So Khosla solved the actual problem by empirical method known as a method of independent variables. So this method consists of a breaking up a complex profile into a number of simple profiles, so each of which is independently amenable to mathematical treatment. Then apply a correction due to correlation due to a thickness of a slope of floor. As an example, the complex profile shown in a figure is broken up to a following simple profile and pressure at a key point obtained. Straight floor of the negligible thickness with a pile at a upstream end. Straight floor of a negligible thickness with a pile at a downstream end. Straight floor of a negligible thickness with a pile at the intermediate points. The pressure is obtained at a key points by considering a simple profile. For the determination of seepage below the foundation of the hydraulic structure, develop the method of independent variable. So in this method, the actual profile of the weir, which is complex, is divided into a number simple profile, each of which can be solved mathematically without much difficulty. So the most useful profile considered are: first is the straight horizontal floor of a negligible thickness provided with a sheet pile at the upstream end or a sheet pile at the downstream end. A straight horizontal floor depressed below the bed but without any vertical cutoff. So ये है फिगर आपको दिखाई दी गई है जिसमें ये है शीट पाइल एट अपस्ट्रीम एंड